आलं का म्हणून जॉईन नाही डायरेक्ट स्क्रीनला लावलेलं. Ayurvedic is needed. Hello, sir. Hello. Am I audible and visible? Yeah. Okay. Good afternoon, everyone. And very pleased to see all the doctors and joinees here on this Liver Day. Today we'll be, presenting or talking about basically, kind of a webinar on Ayurveda interventions for chronic liver disease disorders. And I'll be joined by Vaidya Sumit Srivastavji. Welcome. And Dr. Jayashree Natraj. She has already joined with us. And there is Rashmi as well with us. So welcome to all. And, the session will be first taken by me. I'm a senior consultant with Maharishi Ayurveda. So where I'll be discussing about liver disorders, what is the outline, and in general, what are the reasons, what could be the symptoms of liver disorders as per Ayurveda, a little bit of mixed with modern medicine as well. और फिर हम बात करेंगे about liver map. So that's how we will start. Just give me a moment. Thank you. I hope I'm audible. Yes, you are perfectly audible.
Thank you, doctor, for confirming. And okay, so first of all, I would like to thank Maharishi Mahesh Yogi ji for presenting us with the guidelines and being the guiding light as well to help propagate the knowledge of Ayurveda throughout the world. And then secondly, I would like to discuss what is the outline today in detail. Liver disorder, how is it a global issue? Liver overview, Ayurveda perspective. Then we will discuss about the major reasons for liver diseases. Then Ayurvedic treatment for healthy liver. And then what is the Maharishi Ayurveda's solution to that, which is liver map, its key ingredients, indications, benefits, इसमें जो herbs हैं उसके क्या importance हैं, और liver map कैसे clinically researched जो है product इसमें हमारे माना जाता है. So then coming to liver disorder, why is it a global issue? हालांकि liver जो है perform करता है 500 plus actions in a single day, जो कि यदि आप देखें कि number of days in a year उससे भी double है, right? So that's how important the liver is. और इसको why should people take it seriously और attention क्यों देना चाहिए? Is that liver disease is now the 4th most common cause of years lost. There is a term, the quality of life or years lost because of a problem. So, for example, in this case is NCD, which is non-communicable diseases. So, which is led by coronary heart disease. Is second है self-harm, lung cancer है third number पे, fourth number पर chronic liver disease है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं कि how is it affecting us in these times. Generally many clients comes to us. I'm sure other doctors are also aware about this, that many are suffering from alcoholic or non-alcoholic fatty liver disease. You take the ultrasound, there is grade 1, grade 2, or whatever kind of so anyhow, coming to liver or Yakrat, an overview of Ayurveda perspective. Just a moment, please. Yeah. Okay. So liver originates from Rakta Dhatu, which is Matraj Bhav. We are talking about the embryology of liver. So it is arising out of Rakta Dhatu. So it's very important that when we treat liver, we should treat Rakta Dhatu as well. So Shruta said, Ahar Rasa is first received by Jyotisthana and then nourishes the whole body. Jyotisthana is basically, the liver, because this is where the digestive fire or Jatragni is also supposed to be enkindled, and it is supposed to, make Ranjan, basically do the Ranjan of Ahar Rasa, and then send it to the whole body after making it into blood. Again, this is a vital organ for Chayapachaya of consumed food, which is metabolism. In Vedas, it was also known as Takama or Yakna. The function is obviously Ranjan of the Rasadhatu. Then what is the major reason for liver disease? First is Madhyapan, Ratri Jagran. Again, Ratri Jagran increases the pitta in the body. So that's how, increasing a lot of pitta, this can lead to any liver diseases. Diva Swapna, which is obviously sleeping during the day, specifically also in a lying position. If you're sleeping a little bit in the sitting position, according to Ayurveda, which is still okay for a few patients, but not in general, it's not recommended. Then Vek Dharana, as you all know, 13 kind of Vekas which are not to be suppressed. If people are doing that, then that's also one of the reasons. And Ushna Krishna Ahara is as we all see, a lot of consumption of these kind of foods these days is on the rise.
And then Guru Abhishanda Bhojana as well, which is excessive consumption of Stotorodaka or heavy to digest food items. Then what is the Ayurveda's say in terms of treatment modalities here for having a healthy liver? So one should regularly do Vamana, Virechana, Deepana, Pachana, Mal Shodhana, and Pitta Virechana. Very, very important to do that so that liver can be cleansed and which is then working as good as new. So then coming to what is Ayurveda, Maharshi Ayurveda's unique solution to this. So we have two offerings here. One is tablet, which is made of 14 herbs, and it is presented in 500 milligram of tablet. Then Tivumab uh, of uh, syrup. Again, just a moment. Please hold on a moment. Let me share. Somehow not happening here. So somehow I'm not able to share the screen of my presentation, but anyhow, let me continue. And then Livumap, as we were talking about, there are two presentations from Maharishi Ayurveda. One is tablet, one is a uh, syrup, which is called Livumap. So let me talk to you about the key ingredients here, which are Punarnava, the hepatoprotective and diuretic action, as we all know. Punarnava as in also, serving as a rasayana, making the liver as new as good. Hence the name Punarnava, rejuvenated again. And there is Shigru as well, which is Moringa. It has been researched to be seen, as to provide antifungal effects as well, which we'll discuss in the coming slides. Then we have Putki, the known Pitta Virechaka herb, uh, again does great wonders in terms of taking out excess pitta during Kamala, which is jaundice, like condition. The Ayurveda also it has been known for its anti-inflammatory and hepatoprotective uh, actions. Then we have Guduchi as well, which is again indicated in Kamala and has a lot of effect in regeneration of liver tissue. Although in recent times it has been known to, it has been brought to many that it is creating a lot of liver damage kind of things.
but that remains to be a point of debate for another time. Then we have Bhumi Amla, a known potent antioxidant and anti-inflammatory drug. But what its work is in general, in specific, that we will discuss in the coming slides. Then liver map. What are the key indications here? One is NAFLD, which is non-alcoholic fatty liver disease. Then it can be also useful in viral hepatitis. Then there is another indication, which is jaundice and pre-cirrhotic conditions as well, where it can be helpful. What are the benefits? What is the Yakrat Kriya? Basically, how is it working on Yakrat? It is giving you potent hepatoprotective effect. Then it is a digestive stimulant, which is Deepana and Prachna. And it is also providing you anti-cirrhotic, antibacterial, antiviral, and anti-inflammatory effect. So the dosage of Levumab is tablet 1 to 2 BIT or TID as per the patient's condition. Then there is syrup also 1 to teaspoon, 5 to 10 ml, again twice or thrice a day. Now coming to Kutki, again one of the most important herb mentioned in Ayurveda, specifically in liver conditions, because it helps you get rid of Pitta by Pitta Virechak effect. It helps specify Kapha and Pitta doshas specifically. Action is hepatoprotective and activity is basically reducing the liver toxicity because it is also Vishahara. As far as I can discuss for this in terms of clinical researches or scientific researches, that its extract of roots has shown that it protects the liver in many liver induced liver toxicity conditions. Both the herb and its active principle also have been shown to have hydrochloretic activity and to increase the bile productions. Also, it was seen that it could significantly change the serum bilirubin and liver enzymes, AST and ALT in the treatment group as well compared to the placebo group. So it was shown to be very, very effective. Then comes the Purnanava. Again, it pacifies Vata and Kapha dosha. Action is basically rejuvenation or rasayana. Activity is mainly reducing bilirubin levels. So decreases, the cholesterol, basically, the fat or the fatty tissue over the liver and as well as in the circulation of blood. It also reduces the increment of serum parameters indicative, which are indicative in liver damage. Basically, where SGAT, SGPT, they are increased a lot. Supunanama has been shown to decrease these liver enzymes and hence protecting the liver. Then comes Bhumi Amla. Its effect on doshas is Pitta dosha mainly. And then its action is mainly in terms of antioxidant and anti-hyperlipidemic, serves as the liver tonic. So liver, basically, there were hyperlipidemic rats in which Bhumi Amla was given, and it was concluded that fatty liver changes were kind of reversed and hyperlipidemia was reduced in those subjects. As also, Bhumi Amla was seen to be effective, very effective in reducing the viral dose uh, of liver as well. So it could be used in hepatitis and similar conditions also. Then comes the moringa, where it is shown that it is reducing kapha and pitta dosha. It is hepatoprotective, reduces liver toxicity. So it was seen during a research that treatment with moringa leaves prevented NAFLD in a model of hepatic steatosis as measured by lower concentration of hepatic cholesterol and triglycerides in animals treated with MO compared to the control. So very good outcome there. Also, in vitro studies have demonstrated the inhibitory activity of Moringa oleifera root extracts on gram-positive and gram-negative bacteria as well. So this is where it is, quite useful that way.
And then comes the Guduchi, again reduces all the doshas, but majorly here Pitta dosha, if we can say that. Then action is anti-inflammatory, reduces excessive systemic heat, which is so important as most of the liver or yकृत-related disorders have been attributed to increase of Pitta. So it can reduce, all those kind of things. Guduchi stem extract shows significant effect on CAT and moderate effect on SOD. So that's very, very important that, as a rasayana also, it is, being effective in terms of increasing the SOD enzyme, which is having free radicals neutralized. It also affords protection against biotics, induce liver damage, including fibrosis, and stimulates liver regeneration as well. It plays an important role in normalization of liver functions like ALT, AST. It prevents anti-tubercular drugs and bile salts-induced hepatic damage, which is so important because in India, it's one of the most leading population is in contracting tuberculosis. Uh, Many Indians have that, and some are obviously having this as a silent disease as well. And most people are also put on this anti-tubercular therapy regime, which can run from 6 months, 9 months, or 12 months, depending upon the situation. And once this happens, the antibiotics have liver and kidney damaging effects. So in that, Goduchi can be really helpful. Also, it was seen to be very effective in obstructive jaundice. It also exhibited in vitro inactivating property against hepatitis B and E surface antigens in 48 to 72 hours. So that's also a very good research there. So, as we can see, Guduchi as indicated according to Ayurveda in Kamala, which is similar to jaundice. And here in researches, we can see that this has been also seen in terms of normalizing the liver function, ALT, AST, and all the other anti-tubercular drugs or bile salt induced liver damage. It was also able to reduce that. And then finally, we come to LiverMap. It's clinical research which we have done. It is a clinically proven and scientifically tested product. The trial center was AIIMS New Delhi. Study objectives were to do a double-blind placebo control. Double-blind placebo-controlled clinical trial. The objective was to evaluate the efficacy of herbal compound LiverMap or MA579 in this case as a code name on NAFLD patients and to observe the safety profile of LiverMap. So key parameters were total number of patients which were recruited were 58, and there were loss of follow-up in 8 patients. So study was completed on 50 subjects, of which 26 subjects were put on MS 579, and placebo group had 24 patients. Mean age range was 43 for LiverMap group, and placebo group was 42. Similar age groups were there. So key findings in this study were that there were reduced triglyceride levels in LiverMap group patients compared to control group or placebo group, and the p-value was 0.002. And then reduced pain in abdomen in LiverMap group, good significant p-value there as well. And then reduced hepatic steatosis determined on ultrasonological parameters in LiverMap group, again, very good p-value, which is 0.01. And then plasma transaminases level, no effect was found in both the group. And there were no side effects found after using LiverMap in those subjects. So this is how we have included our presentation here with LiverMap. I hope people understood this, and I welcome the questions from our viewers. And next up
is our speaker, Vaidya Sumit Srivastav ji. Over to you, Mr. Sumit Srivastav. Thank you for listening, and please, over to you, Vaidya ji. नमस्कार सभी को, जो भी हमारे यहाँ पैनल में उपस्थित चिकित्सक हैं और जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस वेबिनार को देख रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया लिवर मैप के बारे में और लिवर की लगभग सारी बातें आपने बता दी हैं। तो मैं मुख्य रूप से जो अपनी चिकित्सा में मैंने यूज किया, जो प्रैक्टिकल मुझे अनुभव हुए हैं, मुझे व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। थोड़ी सी इसकी प्रस्तावना ये रख दूं कि वैसे तो हम देखते हैं कि आयुर्वेद लगभग हर तरह की व्याधि में, मेडिकल साइंस की हर ब्रांच में बहुत इफेक्टिव है, हम सभी अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। लेकिन अगर कुछ ब्रांचेस ऐसी छांटें जहां पर आयुर्वेद की बराबरी कोई भी कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस नहीं कर सकता, या ये कहूं कि कोई भी साइंस उसके आसपास भी नहीं दिखता इफेक्टिवनेस में, व्याधि को ठीक करने में, तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है लिवर का। हम सभी जानते हैं कि लिवर हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगहों पर इसको ट्राइपॉड ऑफ लाइफ में भी गिना गया है कि अगर हम 3 स्तंभ चुने अपने जीवन के, तो उसमें से एक लिवर भी आता है। आयुर्वेद के हिसाब से, जैसा आपने बताया कि अग्नि का स्थान है, रंजन होता है, और जो पाचन है मुख्य रूप से भोजन का, वो लिवर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए लिवर की जो इम्पोर्टेंस है बॉडी में, वो बहुत ज्यादा, उसके बिना लाइफ की, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिए लिवर डिसीजेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं चिकित्सकीय दृष्टि से। और जैसा कि हम देख रहे हैं, आपने बताया कि दिनचर्या बिगड़ने की वजह से, आहार विहार बिगड़ने की वजह से आज के समय में लिवर डिसीज बहुत कॉमन हो गई है, जो शायद पहले नहीं दिखती थी। उसमें बहुत बड़ा कारण मिलावट का भी हो सकता है, उसमें बहुत बड़ा कारण हमारी दिनचर्या की गड़बड़ी का भी होता है। लेकिन अब ये तो है ही, ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन क्या है, ये देखने वाली बात है। तो इसका सोल्यूशन हमको आयुर्वेद में मिलता है। मैं एक एक करके कुछ चीजें और कुछ अपने अनुभव भी आप लोगों से शेयर करता रहूंगा और एक एक करके व्याधियों पे आऊंगा। तो जैसे हम लिवर में देखते हैं, सबसे पहले जो व्याधि आती है वो है वायरल हेपेटाइटिस। और सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि जो इन्फेक्टिव डिसीजेज हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस ही है, वो आयुर्वेद से ठीक नहीं होता। जनरली ऐसी सोच बनी हुई है, और कुछ हद तक मेरी भी ऐसी सोच थी एक समय पहले तक। लेकिन एक केस ठीक करने के बाद मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया, और मैंने फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस ठीक किए, और मैंने देखा कि नहीं, इन्फेक्टिव डिसीजेज में, वायरल डिसीजेज में आयुर्वेद बड़ा गजब का कमाल करता है। और वायरल हेपेटाइटिस में भी आयुर्वेद एलोपैथी की तुलना में बहुत तेजी से काम करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वायरल हेपेटाइटिस का एक केस था, मेरे रिलेटिव ही थे, वो हॉस्पिटलाइज थी, बच्ची थी 16-17 साल की शायद। और हम सिर्फ विजिटर की तरह देखने गए थे। मैं इंटर्नशिप कर रहा था उस समय, शायद, मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं, शायद इंटर्नशिप कर रहा था हम गए उसे देखने, और मैंने देखा उसका शरीर पूरा पीला था, आंखें पीली थी, और उसे एनीमा लगाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि उसे कॉन्स्टिपेशन बहुत सारा था। मुझे पता नहीं उस समय क्या सूझा, क्या भगवान धन्वंतरी ने बुद्धि दी, और मैंने उससे कहा कि इसको एनीमा से अगर हो जाए मोशन तो ठीक है, नहीं होता है तो इसको हरीतकी चूर्ण और कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल, ये 10 ml एरंडी का तेल, 3 से 5 ग्राम हरीतकी चूर्ण, इसको सुबह शाम खिला दो। और हम उसे देख करके आ गए। उस समय उसका सीरम बिलिरुबिन शायद कुछ 8-9 के आसपास था, और एसजीओटी एसजीपीटी 2000-2500 ऐसा कुछ रहा। मुझे एग्जैक्ट नंबर से याद नहीं, क्योंकि शी वॉज नॉट माई पेशेंट। और हम उसे देख करके आए। 3 दिन बाद हमें पता चला कि हमारी दवा देने के बाद से, जो कि छुप करके दी गई थी क्योंकि वो एक एलोपैथी हॉस्पिटल में भर्ती थी, हमारी दवा देने के बाद उस लड़की का, उस बच्ची का बिलिरुबिन बहुत तेजी से नीचे आया, एसजीओटी एसजीपीटी बहुत तेजी से नीचे आया, और वो बच्ची 3 दिन के बाद, जो पिछले 10 दिनों से एडमिट थी, 3 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर के घर चली गई। इस घटना ने मेरा थोड़ा दृष्टिकोण बदला। फिर उसके बाद जब समझ आयुर्वेद की डेवलप हुई, तो मुझे समझ आया कि वायरल हेपेटाइटिस एक तरीके से पित्त की प्रवृद्ध अवस्था है। और उस कंडीशन में, जैसे हमारे गुरु थे वैद्य श्री प्रता जोशी, नानाजी महाराष्ट्र में, शायद लोग जो भी होंगे जानते होंगे, वो कहते थे कि दोष को
जब एकदम एज पे खड़ा हो तो बस उसको धक्का देने की जरूरत होती है, वो बाहर निकल जाता है और व्याधि खत्म हो जाती है, जैसा हम दोष सिद्धांत मानते हैं। तो जो जॉन्डिस है, वायरल हेपेटाइटिस है, या पीलिया है, या कामला पांडु, उसके बहुत सारे नाम हम कह सकते हैं, उस अवस्था में जब पित्त प्रवृद्ध अवस्था में हो, तो अगर हम सिर्फ विरेचन दे देते हैं तो उससे पेशेंट को बहुत आराम हो जाता है। मेरा अनुभव महासुदर्शन घनवटी के साथ बहुत अच्छा रहा है कि हफ्ते 10 दिन में ही पेशेंट में ड्रामेटिक चेंजेस आ जाते हैं। जो पेशेंट 8 या 9 बिलिरुबिन के साथ हैं, या एसजीओटी एसजीपीटी उनका बहुत ज्यादा रेज्ड है, ऐसे पेशेंट्स में भी हमने देखा है। और जो इसके पीछे का चिकित्सा सिद्धांत है वो बहुत सीधा साधारण सा है, जैसा रजत जी ने भी बताया, जैसा लिवोमैप के पीछे का भी चिकित्सा सिद्धांत है, कि मुख्य रूप से आपको अग्नि पर और पित्त के शमन पे और पित्त के रेचन पर काम करना है। लिवोमैप में भी जैसे आप औषधियां देखेंगे तो कुटकी है, पुनर्नवा, भूमि अमल की है, इन सारी औषधियों का काम जो है वो पित्त का शमन करना है, और जैसे कुटकी काम है पित्त का रेचन करना है, और अग्नि को ठीक करना है। तो जैसे ही हम अग्नि ठीक करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है धीरे 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 बॉडी उसको रिकवर करती है और वो ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि मैंने अपने उसमें किया हुआ है कि हेपेटाइटिस बी में भी अगर हम नित्य विरेचन देते हैं, मैंने नित्य विरेचन गौमूत्र हरितकी से दे करके और लेवोमैप जैसी औषधियों का इस्तेमाल करके देखा है कि हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड बहुत कम हो जाता है, और हेपेटाइटिस बी से भी पेशेंट फ्री हो जाते हैं। मेरे पास कोई बहुत सारा डेटा नहीं है, लेकिन अनुभव है कि इस तरह के मैंने कुछ केसेस किए हुए हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी जैसी डिसीज जिसको माना जाता है कि ये लाइफ टाइम रहती है, वो भी इसमें ठीक होती है। ये मैंने देखा हुआ है। इसके अलावा तो फैटी लिवर पे अगर हम आए, वायरल हेपेटाइटिस के बाद जैसे मैंने बताया कि वायरल हेपेटाइटिस में तो बहुत अच्छे और बड़े उत्साहजनक परिणाम आते हैं, और हम सभी जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में मुख्य रूप से इसका कुछ उपचार नहीं है, लेकिन आयुर्वेद से बहुत ब्यूटीफुली ठीक होता है, बड़ी आसानी से ठीक होता है वायरल हेपेटाइटिस, ऐसा मैंने देखा। फिर आते हैं हम फैटी लिवर पर। तो फैटी लिवर जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि फैटी लिवर एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मुझे एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक तो नहीं याद है, लेकिन एक बड़ा नंबर है पॉपुलेशन का जो फैटी लिवर के साथ चल रहा है। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने आप ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आहार विहार की जो गड़बड़ी है उसने एक बार जो परेशानी पैदा कर दी है, तो या तो उसको ठीक किया जाए, या फिर आहार विहार को ठीक किया जाए, तो पेशेंट उधर उधर ध्यान नहीं देता और वो ठीक होता नहीं है। मगर आयुर्वेद में उस प्रॉब्लम को भी बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। उसमें भी जो फैटी लिवर है उसकी चिकित्सा में मुख्य रूप से हम मंडूर और लौह भस्म का उपयोग करते हैं, पिप्पली का उपयोग करते हैं, जिससे जो फैटी लिवर है वो बड़ी आसानी से ठीक होता है। मैंने बहुत सारे केस बहुत बहुत ही सामान्य सी औषधियों से, मंडूर भस्म है, भूमि अमल की है, कुटकी है, हालांकि ये सामान्य नहीं, ये दिव्य औषधियां हैं, आसानी से उपलब्ध है, इसलिए हम शायद इनको सामान्य कह देते हैं, इनसे हमने ठीक किए हुए हैं। तो फैटी लिवर भी बड़ी आसानी से आयुर्वेद से ठीक होता है। फिर लिवर सिरोसिस की बात आती है, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक। अल्टीमेटली चिकित्सा सिद्धांत सभी में एक सा होता है लगभग लगभग, जिसमें अगर अवरोध है तो हम श्रोतोशोधन की चिकित्सा करते हैं, जैसे आरोग्यवर्धनी वटी श्रोतोशोधन के काम में बहुत अच्छा काम करती है। सिर्फ आरोग्यवर्धनी वटी ही फैटी लिवर में काम कर जाती है। डिसलिपिडीमिया, ज्यादातर लोग इसको ऐसे देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो डिसलिपिडीमिया है, मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि डिसलिपिडीमिया मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी है। अगर लिवर फंक्शन को हम ठीक कर देते हैं तो डिसलिपिडीमिया अपने आप कुछ दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि लिपिड के रेगुलेशन का काम तो लिवर का है। तो एक्चुअली लिवर फंक्शन गड़बड़ हुआ है, लिपिड को मैनेज करना। बहुत सारे लोग घी खाना छोड़ दो, तेल खाना छोड़ दो, रूखा सूखा खाना शुरू कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कई बार देखा है जो बहुत पथ्य का पालन करते हैं उन पेशेंट्स में भी डिसलिपिडीमिया देखने मिलता है, बड़ी मात्रा में देखने मिलता है। मैंने अपने कैरियर में एक 1250 ट्राइग्लिसराइड वाला पेशेंट भी देखा, जो बहुत घबराया हुआ था, बहुत पथ्य का पालन करता था, बल्कि वात बढ़ने की वजह से ही मुझे ऐसा लगा उसका लिपिड जो है वो बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड, और उसकी चिकित्सा इसी सिद्धांत पर की और बड़े अच्छे से, बड़ी आसानी से वो पेशेंट ठीक हुआ। एक और बड़ी परेशानी देखने में आती है आजकल बच्चों में, छोटे बच्चों में, वो है नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस में भी हम सिर्फ
कैस्टर ऑयल जो है, 2 बूंद कैस्टर ऑयल दे देने से जो बच्चा होता है उसका सीरम बिलिरुबिन बहुत तेजी से कम होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा प्रवृद्ध पित्त की अवस्था है। उस अवस्था में अगर हम सिर्फ हल्का सा धक्का दे दें दोषों को, तो दोष बाहर निकल जाते हैं और स्थिति हमारे कंट्रोल में हो जाती है। तो मुख्य सिद्धांत तो यही है कि क्योंकि यकृत अग्नि का स्थान है, अग्नि को ठीक करने के लिए अगर अवरोध की वजह से अग्नि दूषित हुई है, तो अवरोध को ठीक करने वाली जो मंडूर भस्म है, लौह भस्म है, ताम्र भस्म है, इसको ठीक करना है। अगर पित्त का अवरोध हुआ है तो कुटकी जैसी पित्तरेचक औषधियां देनी है। अगर वायरल हेपेटाइटिस है तो जैसा कि रजत जी ने बताया कि भूम्य अमल की है और कालमेघ है, कालमेघ चिरायता, ये मैं मेरा महासुदर्शन देने के पीछे का एक जो मंतव्य होता है वो चिरायता ही होता है। तो इन औषधियों का उपयोग करके हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसको मैनेज किया जा सकता है वायरल हेपेटाइटिस को। और हम लिवर डिसीज को आयुर्वेद से बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं, सिर्फ सिद्धांत को पकड़ के चलना है। और यहाँ तक कि लिवर के साथ साथ ये स्प्लीन को भी कवर करता है। हम देखते देखते यकृत प्लीहारी लौह, तो मैंने ये देखा क्योंकि यकृत भी जो प्लीहा भी है वो भी रंजक पित्त का स्थान माना गया है, यकृत भी रंजक पित्त का स्थान माना गया है। तो हम जहां पर रंजक पित्त की चिकित्सा करते हैं तो वहां यकृत पे भी काम होता है और प्लीहा पर भी काम होता है। और जहां तक महर्षि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स की बात है, तो मैं लेवोमैप रेगुलरली यूज करता हूँ और लेवोमैप के मुझे बहुत अच्छे परिणाम देखने मिलते हैं। वायरल हेपेटाइटिस हो या फैटी लिवर हो, मेरे प्रिस्क्रिप्शन में लेवोमैप एक खास इंपॉर्टेंस रखता है और आज तक मुझे इस दवा ने कभी निराश नहीं किया है। महर्षि आयुर्वेद की वैसे तो सारी दवाएं क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं, मैं बहुत समय से इसका उपयोग कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि इन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया, बहुत बहुत अच्छे परिणाम रहते हैं। इसके लिए महर्षि आयुर्वेद एक बधाई का पात्र है। शायद कुछ और आ गया है स्क्रीन पे। रजत जी, रजत जी, रजत जी आप मुझे सुन हाँ सकते जी, हैं? हाँ सुमित जी, प्लीज कंटिन्यू, देयर वाज अ हाँ जी। क्लिक अगेन। तो मूल रूप से मेरी बात तो हो गई है। अगर वैसे तो सभी यहाँ अनुभवी हैं, अगर कोई कुछ पूछना चाहे या कुछ बात रह गई हो तो मैं अपनी बात उस सवाल का जवाब दूं या फिर मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। अंत में यही कहूंगा कि लिवर डिसीजेज में आयुर्वेद, चाहे वो क्रोनिक हो या एक्यूट हो, दोनों ही परेशानियों में आयुर्वेद बहुत अच्छे से काम करता है। आयुर्वेद दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती हैं। और महर्षि आयुर्वेद के लिए एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से क्वालिटी मेडिसिन उन्होंने उपलब्ध कराई है, तो ये दिखाता है कि अगर औषध का गुण अच्छा हो, जैसा कि हमारे चतुष्पाद बताए गए हैं चिकित्सा के, तो योग्य औषधि होना भी बहुत जरूरी है। योग्य औषधि के बिना वैद्य भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो योग्य औषधि बनाने के लिए मैं महर्षि आयुर्वेद का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कृपया पूछ लें या मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे लगता है शायद कुछ है नहीं, तो थैंक यू आप डॉक्टर सभी का साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस, आपके प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किए, बहुत ही वैल्यूबल हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए। और इसके लिए हम आपसे और आगे जुड़ना चाहेंगे और भी बात करना चाहेंगे। और इसी समय में मैं डॉक्टर रश्मि जी को इनवाइट करूंगा, वो प्लीज आए और अपनी बात हमसे शेयर करें। थैंक यू डॉक्टर रश्मि जी, प्लीज ओवर टू यू। डॉक्टर रश्मि जी, आपका म्यूटेड है बटन, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते, दिस इज डॉक्टर रश्मि मस्के फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। मैं पिछले 10 सालों से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं महर्षि आयुर्वेद और अ, जो राजीव सर है, राजीव महाजन सर हमारे यहाँ पे आते हैं एमआर, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज इस मौके पर यहाँ बात करने का हमें मौका दिया गया। तो जैसे कि रजत सर और सुमित सर ने बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं, फिर भी हम अपना एस्पेक्ट कुछ रखना चाहेंगे। हम इसमें लीवर जो है वो दिमाग के बाद सबसे बड़ा ठोस अंग है, जिसको ही इंजन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। बॉडी के जो 500 से ज्यादा फंक्शन लीवर करता है। बाकी सारे अंग सही काम करे, इसके लिए लीवर का नॉर्मल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
जैसे पहले भी डिस्कस हुआ, ये पित्त का स्थान है और पंचभूताग्नि का स्थान है। लीवर के जो फंक्शंस है अलग अलग, वो ये है कि फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यूनिटी, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स एंड ग्लाइकोजन का स्टोरेज करना। लीवर में रक्त धातु का रंजन होकर रक्त धातु में रूपांतरण होता है। रक्त धातु को लीवर में स्कैन किया जाता है और उसमें जो टॉक्सिन्स जमा है उसको वहीं पे स्टोर कर दिया जाता है ताकि रक्त में इम्प्यूरिटीज ना आ पाए। लीवर द्वारा बाइल सिक्रेशन होता है जिससे कि फैटी एसिड्स डाइजेस्ट होते हैं। लीवर में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का प्रोडक्शन होता है। उसके साथ ही जो प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स है जो कि ब्लड में क्लॉट जमा ना होने देते हैं, तो उनका भी प्रोडक्शन लीवर द्वारा किया जाता है। लीवर में ही शुगर का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में होता है जो कि मसल में स्टोर होके ग्लाइकोजन एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं। उसके साथ ही लीवर में प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। जो ट्रेस एलिमेंट्स है आयरन, कॉपर, विटामिन ए, डी, बी12, इनका स्टोरेज लीवर में किया जाता है। अग्नि जितना प्राकृत रहेगा उतना तो शुद्ध रहेगा। अगर अग्नि में कुछ इम्बैलेंस आएंगे तो रक्त धातु की अशुद्धि होने से लीवर के कई सारे डिसीज देखने मिलेंगे, जैसे कि फैटी लीवर है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस ए, बी या सी है। इन सभी लीवर डिसीजेस में जो कॉमनली लक्षण देखे जाते हैं वो ये है कि त्वचा के ऊपर मकड़ी जैसी नीली रेखाएं बन जाती है, कंडू की उत्पत्ति होती है, मुख दुर्गंध, दाग धब्बे या मुहासे बन जाते हैं, चोट लगने पे खून नहीं जमता है, हस्ततल है उनमें आरक्तता बन जाती है, नेत्रपीतता, अग्निमांद्य, अपचन और थकान महसूस होती है। हालांकि ये सारे लक्षण पेशेंट जब क्रॉनिक होता है तभी देखे जाते हैं। इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट में कोई भी लक्षण नहीं देखने मिलता है। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट एक्सीडेंटल कोई भी यूएसजी अल्ट्रासाउंड करा देता है और उसमें उनको फैटी लीवर डायग्नोस हो जाता है। तो लीवर डिसीज है या नहीं ये देखने के लिए कौन कौन से टेस्ट करने जरूरी है, तो सबसे पहला और जरूरी टेस्ट आता है कि यूएसजी या अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। उसके बाद है लीवर फंक्शन टेस्ट जो कि ब्लड का टेस्ट है, और अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर डायग्नोस हुआ है तो उसके ही आगे का जो स्कैन है वो सीरो स्कैन, फाइब्रो स्कैन हम कर सकते हैं। जो लीवर डिसीजेस है उनके रीजंस क्या क्या है, कौन से हेतु के द्वारा लीवर डिसीज की उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहला और सबसे पहला इंपॉर्टेंट हेतु है अल्कोहलिज्म, जो कि अभी के दिनों में बहुत ज्यादा कॉमन है। प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल से युक्त खाना है वो, पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल, स्ट्रेस का लेवल अगर बहुत ज्यादा है तो वो, चाय कॉफी या फिर ऑयली या स्पाइसी फूड अगर बहुत ज्यादा है तो उससे भी लीवर डिसीज बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अगर लीवर डिसीज से बचना है तो कौन सा आहार हमें लेना चाहिए, तो हम बात करेंगे आहार के बारे में। तो आहार में हमें लेना है ऑर्गेनिक एंड फ्रेशली कुक्ड फूड। अभी ये सब बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक्चुअली डॉक्टर्स को तो सब पता है, लेकिन कई जो नॉन मेडिकोज या लेमन भी इस सेशन को देख रहे होंगे तो उनको भी कुछ इंफॉर्मेटिव इस सेशन में लगे, इसके लिए। इसके साथ ही सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना है ताकि जो टॉक्सिन्स है बॉडी से फ्लश्ड आउट हो जाए। लीवर अगर इम्बैलेंस लीवर इम्बैलेंस ना हो इसके लिए हमें पित्त शामक आहार लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पित्त शामक आहार में मधुर फल, दूध, हरी सब्जियां, इनका समावेश करना जरूरी है। आहार जो हमें अवॉइड करना है वो है प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स, टॉक्सिन से युक्त आहार और पेन किलर्स, अल्कोहल, स्मोकिंग। उसके साथ ही जो आम्ल रसात्मक आहार है यानी कि फर्मेंटेड फूड है, इडली डोसा वगैरह वो सब है, विनेगर, चिलीज या सॉल्टी फूड, ये सब हमने आहार के बारे में देखा। इसके बाद आता है विहार। तो विहार में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप खाना खा रहे हो वो टाइम पर खाएं।
रात का खाना जितनी जल्दी हो सके उतना खाना है। रात को 10 बजे के पहले ही सोना है। पित्त का जो काल है वो रात को 10 से 2 बजे तक है। तो उस दौरान अगर हम जगते हैं तो पित्त की वृद्धि होके लीवर फंक्शन में एबनॉर्मलिटी आने वाली है। अगर निद्रा कम ले रहे तो उससे भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होके वेट गेन होगा और लीवर पे अफेक्ट करेगा। इसके साथ ही जो गुस्सा या चिड़चिड़ापन है उससे हमें परहेज करना है। जो बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है योगा या फिर कोई भी तरह का एक्सरसाइज। हमें दिन में 30 या 45 मिनट तक किसी भी तरह का एक्सरसाइज करना है। उसके साथ ही मेडिटेशन हो कि जिससे जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी कम रहे और लीवर का फंक्शन नॉर्मल रहे। इस तरह हमने आहार और विहार का अगर पालन किया तो क्या क्या परिणाम हमें देखने मिलेंगे। तो एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, त्वक वर्ण प्रसादन हो जाएगा, यानी कि ग्लॉसी स्किन हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कई सारे पेशेंट, तो हम वो देख पाते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी पेशेंट की। आहार विहार के बाद आता है औषध। तो औषधि के बारे में कई सारा डिस्कशन हुआ है, लेकिन जो कॉमनली यूज ड्रग है तो वो है कि हिपेटोप्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव ड्रग्स। तो इससे सबसे पहले आते हैं हरिद्रा, दारू हरिद्रा, गिलोय, भूमि अमल की, कुटकी, शुंठी, पुनर्नवा और अमल की, जो कि लिवोमैप सिरप में भी इसमें से कई सारे कंटेंट है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। लीवर के जो डिसीजेस है अलग अलग, उसमें कॉमनली दो मेन डिसीज है। वो सबसे पहला है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जिसको ही कॉमनली फैटी लिवर डिसीज बोलते हैं। अगर 3 लोगों का स्कैन किया जाए तो उसमें से एक जन का आपको फैटी लिवर डायग्नोस होगा। तो इतना ज्यादा ये कॉमन है, लेकिन 80% लोगों में ये नॉन सिम्टोमेटिक होता है। यही फैटी लिवर की ही कंडीशन अगर क्रॉनिक हो जाती है तो उसका कन्वर्जन लिवर सिरोसिस में होता है। लिवर सिरोसिस जो है वो लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड 125 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड है। जो टॉप 12 डेथ की रीजन है उसमें से एक लिवर सिरोसिस भी है। लिवर सिरोसिस की अगर पैथोलॉजी देखे तो लिवर टिश्यू का कन्वर्जन इसमें स्कार टिश्यू में हो जाता है। इस प्रोसेस को लगभग कई महीने कई साल लग जाते हैं। ये जो लिवर सिरोसिस डिसीज है ये नॉन क्यूरेबल है, बट इसको ट्रीट कर सकते हैं हम। इसमें जो डैमेज होने वाला है इट इज नॉट रिवर्सिबल, मतलब ये परमानेंट डैमेज होने वाला है। लिवर सिरोसिस जैसी कंडीशन में डायग्नोसिस जितना जल्दी हो जाए उतना ही हम इस डिसीज के प्रोग्रेस को स्लो डाउन करके पेशेंट को सिम्टम से छुटकारा दे सकते हैं। अभी जो लीवर के कॉम्बिनेशन से ये एक्चुअली मैं स्किन में ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने अपने प्रैक्टिस में जिन 2-3 कंडीशंस में लीवर जो लीवोमैप वगैरह कॉम्बिनेशन है वो यूज करके रिजल्ट पाए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि अगर किसी पेशेंट्स में मुहासे वगैरह बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, कील मुहासे या फिर दाग धब्बे, तो उन पेशेंट्स में अब बाकी सब पेशेंट भी बाकी सब करके आता है ऑलरेडी। और हम भी अगर बाकी मेडिसिन देख के भी जिनमें रिजल्ट नहीं है, रैंडमली भी उनमें लिवोमैप सिरप दे दे 10-10 ml 2 बार, और लिवोमैप टैबलेट एक एक टैबलेट 2 बार, ऐसे अगर 1 मंथ के लिए दे दो आप, तो भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मैंने खुद देखे हैं। अगर बहुत ज्यादा दोष है तो दोष मात्रा बहुत ज्यादा है तो उस पेशेंट्स में आपको कपिंग थेरेपी वगैरह ऐसे जो शोधन है वो भी करने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही अलग अलग तरह के जो स्किन एलर्जीज है, जैसे कि फूड एलर्जी हो या ड्रग एलर्जीज हो, अलग अलग पेशेंट को अलग अलग रैशेस आते हैं बॉडी के ऊपर, तो उन कंडीशंस में भी आप लिवोमैप सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल करके उससे छुटकारा पा सकते हो।
स्किन एलर्जीज में जो रक्त मोक्षण करते हैं, कपिंग के हम कम से कम 3 सेशन लगातार करते हैं और वीकली गैप से। फर्स्टली जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आपके पास आते हैं तो फर्स्ट टाइम ही एक कपिंग वेट कपिंग करना है और साथ ही में लियोमैप सिरप और टैबलेट शुरू करने हैं। तो कम से कम 2 महीने के इसमें वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और ऐसे कई पेशेंट को हमने ट्राई करके उनको ठीक किया है। आजकल जो बहुत ज्यादा क्रेज में है कि लोगों को रहता है कि स्किन में ग्लो आए या फिर व्हाइटनिंग का थोड़ा बहुत ज्यादा क्रेज है, तो उस कंडीशन में भी आप ये लियोमैप यूज कर सकते हैं। और मैं एक अमृत कलश के बारे में बोलना चाहूंगी। ज्यादातर अमृत कलश जो है वो रसायन के तौर पे यूज होता है या फिर ब्रेन जो इम्यूनिटी बूस्टर या फिर ब्रेन टॉनिक के तौर पे यूज होता है। लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस में कई पेशेंट्स में जो बाकी ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसके साथ अमृत कलश का यूज करके उन पेशेंट में एकदम जैसे उनका कलर तो पूरा चेंज नहीं होता है कभी पेशेंट का, लेकिन फिर भी जो ग्लो है, इनर ग्लो है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है अमृत कलश के यूज से। तो महर्षि आयुर्वेद का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन में मुझे समाविष्ट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रश्मि। बहुत अच्छा लगा आपसे लिवर के जो इंटरवेंशन है उसके बारे में सुन के कि किस प्रकार से सिक्वेंशली, जैसे लिवर का प्रॉब्लम है, NAFLD है, फिर उसके बाद किस तरीके से वो सिरोसिस में बदल जाता है और कॉमन एक आदमी उसको कैसे समझ के किस प्रकार का खाना खाए, और दूसरा उसका जो त्वचा या स्किन से जो रिलेटेड है इम्यून, उसका भी बहुत अच्छा एंगल हमने आपसे समझा। स्पेसिफिकली इसमें यदि हम देखें कि कृदम देह, बेसिकली जो देह की कलर है वो चेंज हो जाता है, उसका जो ओज है या पीलापन है या पांडुता है उसमें जो आती है, वो काफ़ी उसमें आयुर्वेद की हमें बोलना चाहिए कि बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन है। और इसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर जयश्री जी से समझेंगे और लिवर के बारे में आई एम श्योर उनके पास भी काफ़ी बातें हैं हमसे साझा करने के लिए। सो इनवाइटिंग यू डॉक्टर जयश्री जी, over to you. Thank you very much. Thank you. Hello, can I share my screen? Rajat Sharma Di, can you hear me? Please. Yes, I hear you. Please share your screen, ma'am. Yeah. You may. Anna? Yes, we Hello? can. You can see the slides. I'll just give it to her. We can see the slides, doctor. Yeah. 1 second, I'll just give the slide show. What is this? Yeah. Okay. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव. It's a great pleasure to be in this on this occasion of World Liver Day. When I say World Liver Day, I was just thinking, is it the liver of the world or liver of the individual? Because even the world liver is also affected. Everything you take, food is adulterated, medicine is adulterated, so many things. So we are also, there are a number of reasons for this. One most important is insult, insulting the nature. That has resulted in so many newer diseases and newer complications. Similarly, we are insulting our own system, and which has made us to see this day, observe this day as
a liver care day. So we need to have, and all the speakers, my friends, Dr. Rashmi and Dr. Srivatsava, then Dr. Rajat Sharma, have made it very easy for me that I can just share few information because whole details have been given already. So keep your liver healthy and disease free. That is the slogan for the day. And we should feel proud that India is the first country in the world to include non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, in its national program for prevention and control of cancer, diabetes, cardiovascular diseases, and stroke. So we really feel pride to have this. Now a question comes, Ayurveda, how it views the liver? As liver, of course, is identified as a Krut, as said by Rajat Sharma Jyoti Sthana it is. But the focus as we are giving to a single organ was not there. You don't find so much details about the liver. But whatever is described under liver diseases could be observed in our literature. This is because of our holistic science. The whole health and sickness revolves around three doshas and Agni. A balanced state of these factors, in turn, protect every part, every organ, every tissue in the body, in which liver is also one. All diseases have a category dominant with Pitta, can be predisposing factors or condition for liver affliction. Later, with Anubandha of other doshas, the stages of liver diseases exhibit a similar prognosis. Now, I need not speak much about the functioning of the liver. I'll just take this slide to summarize. It has more than 500 over metabolic pathways. You can understand the enormous activity which is related to Pitta this liver is doing. It's a part of digestive system. It produces nutrients, converts sugar into glycogen, produces factor like bile for digesting fat, and metabolizes drugs, regulates the composition of blood. Now, what's the burden of this liver diseases in the present scenario? Liver disease accounts for approximately 2 million deaths per year in the world. 1 million due to complications of cirrhosis and 1 million due to viral hepatitis and hepatocellular carcinoma. Cirrhosis is currently the 11th most common cause of death globally. Liver cancer is the 16th leading cause of death. Combined, they account 3.5% of all deaths worldwide. Fatty liver about 80 to 90% in obese, and with DM, there could be 90% of prevalence. So this gives us an idea about how deep, grave the problem is, how much care we need to take to prevent, protect this liver, to have a healthy life. Now, coming to the etiology of liver, this is already said and done. Any condition which negatively impacts the liver could be the cause. And finally, we know very well it's a viral, could be genetic, or some of the autoimmune disorders also can be the cause. Alcohol abuse, obesity, and most importantly, which has to be focused at the moment, is the lifestyle and certain drugs, medications, and chemicals. Now, acute signs of sluggish liver, I need not mention this, but anyway, since the slide is there, I'm just telling. Anyway, there could be constant fatigue and exhaustion, white and yellow coated. See, when it is a coated tongue, immediately we jump to a conclusion it is one type of ajirna. Based on the color and consistency, quantity of coated, we Ayurvedic practitioners try to understand what the type of ajirna the person has. So resulting into poor digestion, nausea after fatty meal, weight gain, blood sugar issues could be there, headaches, and pain in the right hypochondriac region, and some of the skin problems could be seen. There could be loose fatty stools because of the steatorium, and when there is a stasis. That is what we call it as Niruddha Padakamala. And deficiency of these 4 vitamins for which the liver is responsible.
Fever can develop in both viral and alcoholic hepatitis. Jaundice is occurring in both hepatocellular dysfunction and cholecystic disorders as the very most specific symptom, but often jaundice is the later onset, and there could be right upper quadrant pain, as I said earlier. Now, what is a chronic liver disease? A liver disease which stays beyond a period of 6 months should be considered as chronic liver. When we can't diagnose only, that itself takes, because it develops very slowly, it takes years many a times for a fatty liver to develop. Or even hepatitis, they may be carrier, but we will not be seeing the clinical manifestations. So in that way, by the time the diagnosis is made, the disease could become chronic. Only in case of acute inflammatory changes, where the individual has got some clinical manifestations, then it could be understood. And most of the times, especially we people, when we treat ajirna, we need to take care how the liver is also functioning. And there are more than 100 different types of liver diseases. It could be, as earlier said, by virus, caused by virus, drugs, or cancer, or inherited disease. And there are hepatobiliary manifestations. A big list is there. Few I have just quoted here. It starts with viral hepatitis, fatty, diminished liver function, alcoholic liver disease, cirrhosis, gallstones, cholecystitis, tumors, and gallbladder. This is how the liver looks when it is healthy, fibrosed, or cirrhotic, or cancerous. Most important information we need to know is the stages of progress of liver. While causes and types of liver is different, the progression of the disease and the damage that occurs is similar. So that is how the stage 1 is inflammatory, stage 2 is fibrosis, stage 3 cirrhosis, and stage 4 is liver failure. Acute viral hepatitis usually goes away on its own. Hepatitis A, but still I feel as an Ayurvedist, anything goes away on its own. It may be latent and any simple nidana could flare up. Hence, it needs to be treated, diagnosed and treated. Hepatitis A and B, sometimes, A is only acute infection, where B and C could go lifelong. So that means to say we need to monitor the case lifelong. It is not something we gave medicine for 3 months and then stopped. So we need to monitor the individual. Then acute hepatitis A, B, C may make one to be sick for few months before it gets better. And diagnosis, all of us know, hematological liver function test, lipid profile, urine test, imaging, USG, MRI transient elastography, and FNAC. Now coming to part of our science, Sarve Rogapi Mandagni. This is the most important principle we have. Very strong concept and applicable, adaptable forever. So the big list is there which are caused by Mandagni. In that, in a few, I would like to see the ajirna. Ajirna, as I'm repeatedly telling this, ajirna is very simple condition people take, and on the counter they get treated. And this has to be avoided because all ajirnas are not the same. Ajirna caused in malignancy is entirely different from ajirna in fatty liver. Ajirna because of the post-corona, ajirna post-fever. So in that way, ajirna after an atisara could be understood properly and then treated specifically. And some of the shulas, Udara shulas, something flashes to our mind is Shankavati first. It would start with that and then end up with Hingu. But Udara shula needs to be explored properly and then understood. It could have a source in the liver. And Grahani is the most important condition which we need to, while we treat, we need to focus on liver too, which can give rise to a chronic liver disease. Kamala, I need not talk much about it. Our friend Dr. Srivatsa have detailed it quite well. Then Vibhanda again, as he said, Erenda. Yeah, Vibhanda could be managed very effectively in Ayurveda, but at times the local causes, if it is of an organic lesion, it requires something
different treatment. And coming to Granthi, Arbuda, all these are specific to the liver as such. And then Rakta Pitta is one we cannot forget, because that could be one of the most important upadrava of liver disorders. At the end, I would like to say that Shama Prakopo Doshanam Sarvesham Agni Samshritav, whether the palliation or aggravation of doshas is only because of Agni. Tasmat Agnim Sada Rakshayit, protect the Agni always. Nidanani cha varjayit. Because we also have a principle telling that Nidana Parivarjanameva Chikitsa. Like once the fatty liver has occurred, if the person leaves alcohol or leaves a intake of fat, it's of no use, because just leaving that practice does not reverse the disease. So there it needs to be treated. Hence, as a prophylactic measure, Nidananicha Varjayat is the best one to be adopted here. So Vadis related to Yakrut, first one stands as Kamala. It could be Koshtashrita, Shakashrita, Koshta Shakashrita, or Halimaka or Arishtalakshanas like complications. Then Pitta Japandu, Pitta Paitika Jwara, Haridraka Jwara, Haridra Meha, Asadhya Madatya Lakshana, Rakta Pradoshaja and Rasa Pradoshaja Vikaras. Of course, some of them should be considered when we are treating to be the liver to be focused while managing such conditions, Ekritodara and Arbuda Granthi Gulma. Now, classification, whether Pandurogante, Anya Roganteva, whether it is a Paratantra Kamala or Swatantra Kamala, Bahupitta Kamala, Koshtashita Kamala, Kamala Krita Vikaras, and Shakashita Kamala. So these things have to be clinically differentiated if possible. With the help of modern gadgets, it should be differentiated and then treated. Now, when we speak of liver diseases, especially the fatty liver, which is going to be a most chronic one, the changes in the liver occurs in 4 phases, already it is said. So stage of inflammation appears to be Pitta Pradhana. So the focus is Pitta. But I would say that all the liver diseases will have all the 3 doshas affected. Because what is the karma initiated is by Vata, what the karma is doing by Pitta, transformation and other things. And what is the resultant is Kapha. So you cannot just leave one dosha and say it is only one Ekadoshik. So this is a Tridoshik in nature. And the stage of inflammation appears to be Pitta Pradhana. Stage of fibrosis is Kapha Pradhana. Still you have a chance to prevent the scarring. And cirrhosis is Vata Pradhana. Now, as said by our friend Dr. Srivatsa, people avoid and start taking only bitter tonics, very bitter things always. So we know very well Tiktarasa causes Rokshata and Dhatu Shoshana. So this Dhatu Shoshana definitely results in scarring. So this has to be prevented. Failure, of course, it is Sannipataja. Most of the times it could be Asadhya. And coming to management, we start with Shodhana. As said earlier, Virechana and Raktamokshana Anjana. So Raktamokshana Anjana I don't practice. Virechana is the one which often I take up. And Shavana using both Kashtaushadha and Rasaushadhas, Shastra Agni Karma. Most important as both prophylactic and palliative, Hita Acharana, that is with reference to Ahara, Vihara, Vichara. This is very well. As our Dr. Rashmi mentioned, Krodha, Chitchidapan ko kam karna chahiye. So this is Ahara, Vihara, Vichara. All the 3 are like 3 pillars of life, and they have to be very judiciously indulged with. And comorbid conditions are to be treated, because we know very well obesity is the reason for fatty liver. The DM, diabetes mellitus, is a reason caused for fatty liver. So in that way, the Ahara Vihara Vichara need to be addressed and scheduled properly. Then comorbid conditions have to be dealt properly along with taking care of the liver.
When it comes to Shodhana, it varies based on the chronicity and clinical manifestation. Bahupitta Kamala, Pitta Rechana with Katuki. And Alpa Pitta Kamala, Mridu Rechana. As said earlier, it could be Gomutra Haritaki or Eranda Taila or Eranda Brashta Haritaki. Appears to be more effective. Now there are a big list of medicines. One or two I'll just mention here. Suvarna Sutashekara 1 gram with in a week with Amrut Sattva, followed by 50 mg daily as a maintenance dose, works wonders in maintenance of hepatitis. Then Arogyavardhini, as mentioned by our Srivatsav and also Rajat Sharma. Arogyavardhini is a drug. People are afraid whether this Shoshada could be used for a long time. Has seen my own professor, Dr. Hugar, who was taking it for 4 decades, daily 1 or 2 tablets. So he was hale and healthy even at the age of 83. So Arogyavardhini, the very name itself indicates how it has to be taken. That is the discretion of the physician. But it is one of the best yoga we have for all time. And plain Sutta Shekara Rasa, because we have both for one who can afford, one who cannot afford. So we can treat. We don't think that always the rogi should be adhya. And Nishamalaki is another drug, both in dyslipidemia and also in fatty liver. Nishamalaki works better. Nisha itself is a very effective drug in liver disorders. And Amalaki as an antioxidant and a hepatoprotective, this is a wonderful combination for a maintenance dose in any chronic liver disorders. We can use it for a long time. And coming to some of the kashayas, Patola Katurahunyadi Kashaya, Gutuchadi Kashaya, Vasa Gutuchadi, Nimbadi are the few. And you can just add many lists because we have almost all our Ayurvedic preparations with hepatoprotective drug, an antioxidant in it, a rasayana in it, and a Deepanapachana in it. That is a wonderful way of making yogas by our acharyas. Now I just talk about just 4 important drugs as single one which you can use. This is the first one I'll take up is the Trikatu one, because most of the times I have heard people, why should we give Trikatu? It is already Pitta Parkopajanya Vyadhi. But actually what happens, though Pitta Rechana is needed, but it is not that easy. Just a push may not move it. So there you need to. If there is Ruddha, Avarodha, then Trikatu comes to hand. Just for 3 to 5 days, Trikatu Churna twice a day with lime juice and honey on empty stomach. 6 a.m. and 6 p.m. will be the best time of administration. Maximum is 5 days. Within that period, you can see that Malaranjaka presents in the Mala, if there is no organic liver. Once this is achieved, you can take up Katuki. Katuki is I always give it in the form of Kashaya. Then Pitta Rechana is much more effective than in the Churna form. It's most important, our Ayurvedic seers have advised in what dosage form we need to give. That is what works wonders than just an extract or just a powder. So the Katuki, Kashaya, with adding few drops of Grita, preferably Gugulu Tiktaka Grita or Amrita Grita, could be added and then given. It is only single dose a day. Like it is given on the first day, there is no change. Second day, there is no change. Third day, patient may have 1 or 2 loose motions. Then you stop it for 2 days. Again, give it. So thereafter, once in 3 days or once in 5 days, then once in 7 days, you can taper it and stop it. Meanwhile, you can get the LFT done. SGOT, SGPT test you can do and see the changes dropping of this raised SGOT, SGPT so very effectively. And the one drug comes is the Kumari. A single drug therapy, usually it is given with the pulp, the juice. Mucilage is given with curds on empty stomach, a single dose. Can be given for 3 to 5 days. So this also, in that 5 days, without giving any other medicine, you can find the change. That is how the single drug has got potentiality and we should explore much more. Now we have, since we are talking about Maharshi Ayurveda, Livomap is the one which is a very unique combination. It has got each ingredient having proven for their hepatoprotective activity
anti-inflammatory activity, antiviral, fibrolytic, and also it's a rasayana. Punarnavi karoti iti Punarnava. So wherever you want a regeneration, Punarnava becomes a drug of choice. Then we have Kalamega. I need not talk. Thousands of studies have been done on this. It's a king of bitters, prevents, that is what Sudarshana Ghanavati is a most important. And along with Nisha Malaki, we can continue it as a maintenance dose, Bohemia Malaki antiviral. Like that, I need not go into the details because Dr. Rajat Sharma has given us the whole ingredients details already. Now, I have found that Livomap as a Anupana all you can use with the combination what it has got, because it has got Amruta, Amapachaka, and also Jarahara. Like that, it has got ingredients working on many conditions with the manifold pharmacological activities. And initial stages, we can just give it with Ushna Jala or with Jwara and Agnimandya. PTK or Panchatikta Kashaya, then Shadangapaniya could be given. When there is Daha and Praseka, Kshara Jala, like Palasha Kshara or Trankana Jala could be made, or Punarnama Gokshara, Kvata could be utilized. With Brahma and Trishna, because the Lakshanas varies in every case, it is not the same. Jiraka Dhanyaka Jala. So Dhanyaka Jala also helps in wherever there is nausea and vomiting. Jara and Sama Lakshana, Amrita Kashaya becomes handy. Then Ati Dorbalya Shrama Trishna Ikshurasa could be utilized as Anupana for Livomap. I always feel if you are treating a fatty liver disorder, it's always fatty liver and the Medo Dhatu. Both should be considered here. So, Medo Dhatu was just a tissue, adipose tissue, but now they have understood that it is an endocrine gland which controls coagulation, appetite regulation, immunity booster, then glucose and lipid metabolism, reproduction, angiogenesis. So the whole list goes on. Most importantly, vascular tone control. So, Ati Karshana Chikitsa is becoming one of the reasons for people going for losing the vascular tone. That is how we have vascular diseases. I think we need to educate people in this regard too. Principle of Medhora Chikitsa is beneficial in fatty liver. A combination of Livomap and Lipomap gives much more encouraging result. More than 5 to 10% of the liver is fat, diagnosed as fatty liver. Earlier diagnosis is better and we can prevent the further damage. There are few more Maharshi products which also use, Arogyavardhini I spoke already. This Dizomap. Dizomap could be given initial stages or sometimes later for a follow-up for a long-term therapy, very safe drug. Then Avipathic Karachurna. When the patient is not suitable for classical Virechana, you can detoxify the system by Avipathic Karachurna. Within 5 days, we can see the change. And Shilajitu, we know very well, there is no disease which cannot be conquered with Shilajitu. Shilajitu Rasayana and Livomap makes a very good combination for chronic liver diseases. Then Abhrakabhasma. Abhrakabhasma is a best Rasayana wherever you require a regeneration. And also a Kafahara. A fat, Meda and Kapha go hand in hand based on Ashraya Shri Bhava. So Abhrakabhasma is another drug of choice, which can be Rasayana and also actual therapy for liver disorders. Amalaki Rasayana alone could be utilized. Very long term, because when you speak of B and C hepatitis, if you have to give them lifelong therapy, Amalaki Rasayana becomes the best one with the periodical Shodhana. And a combination of Amlanth and Triphala is again another important, because Amlanth has got the Kshara, which helps in Medo Vilayana. What we expect is in Medo Rogas, we want either Lekhana or Vilayana. So when your liver has got fat deposition, it requires Vilayana karma. So that pharmacological action could be achieved with Amlanth, and
Lavanga and pipali regulate the process of digestion and metabolism. Rasayana and antioxidant have a protective activity we can see from Nagara, Amalaki, and Musta. That is how this makes a very good combination when in fibrotic level. This will be much more helpful. And Amrit Kalash, I need not talk. Any disease, you name it, where you want to improve the immunity, where you want to improve the whole well-being, feeling of well-being of a patient, Amrit Kalsha is the best one. Because Amrit Kalsha had given even in case of metastatic changes in liver. It was terminal cases, but they showed excellent response initially for some time. So that is what, what the patient requires. At least if he's able to take, few little bit of food and then a few spoons of, milk or some liquids, it's a boon for him. So that is what Amrit Kalsha does. He makes him feel that he's fine, he's improving. That miraculous effect, I should not be using miraculous, that is the effect of Amrita Kalasha. It could be used in cases of terminal or in cases of chronic liver disorders where we need to them. We need to, which are responsible for this hepatoprotective action or regeneration or reversing the disease. Phenyl compounds common in essential oils, monoterpenoids, diterpenoids, and triterpenoids, steroids, alkaloids, and other nitrogenous compounds are the one which are one. So the latest studies of SARS-CoV-2 have indicated that incidence of liver injury in patients with COVID-19 ranges from 14 to 53%. This has to be noted because post-COVID cases, most of them are coming out with this ajirna lakshana, which could be because of the sluggish liver, which in turn has resulted from the drugs or the medications given during the acute phase of the disease. A definitive mechanism by which liver injury develops in patients is not known yet. So protecting Agni is to protect liver. That is a slogan for the day for we Ayurvedists. Because Shante Agni Mriyate Yukte Chiram Jivatya Namayam. Rogistyat Vikrite Moolam Agni Tasmat Niruchate. So man is as old as Agni. Take care of Agni at all levels. Concluding, any disease that has involvement of Annavasrotas can affect liver. Any disease have the dominance of Pitta involvement can impact the liver. Chronic dosha vaishamya can affect liver, which has become weak and with kavaigunyata. Most of the chronic long-term medication without detoxification can affect liver. This we need to think of. As the manifestations are often that of Annavasrotas, often the diagnosis can be missed. So based on the chronicity, based on the severity, based on the overall being of the individual, we need to focus on to know about the functioning of the liver periodically. Stage-wise specific management is essential. So Shodhana as a prophylactic has better positive impact. Above all, Ahara, Vihara, Vichara need to be addressed both in prevention and management. To conclude, Sarvepi Sukhinas Santu, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. My humble salutation to Maharshi Mahesh Ji, who took Ayurveda globally. He was pioneer in this. And thank you one and all for your patience listening. And finally, I thank these two Ashwini Devatas from our Karnataka, Dinesh and Rajesh, and then Sudhamshu from Maharshi, and also Dr. Rajat Sharma. Thank you very much. Namaste. Jai Gurudev, all of the participants. Thank you very, very much, Dr. Jayashree ji. Thanks for sharing such a comprehensive presentation with us. The knowledge bites were amazing. You shared a lot of information about liver disease, the symptoms, and how to deal with them. You mentioned a lot about the rasayanas, the kashaushadhis, the rasaushadhis,
how you use them in practical experience, especially liver metastasis, using of Amrit Kalash, as well as I also, and in fact, viewers must have also liked how you described, liver maps Anupana, how it can be used in different diseases with, what kind of Anupanas, we can take the liver map with. So that was a very interesting bit there. Thank you very much. Now I invite questions from our viewers. If there are any, please share with us. We would like to hear them and discuss those questions. So one question which we have is if liver map can be used in tuberculosis. See, directly for tuberculosis, okay, it can be used to help regulate the Agni. But in general, like we discussed earlier in our presentation, that many people who are put on anti-tubercular therapy, ATT, as we call it, so it has many bad effects on liver and kidney. In those patients, as also seen in some clinical researches on the herbs mentioned earlier, that they can help reduce the toxicity caused by these drugs. So Limumab can be really useful in those kind of cases. And then another question which we have is that what kind of doshas are generally involved in causing these liver related problems? As far as we understand that all the doshas can cause liver injuries or liver toxicity, as mentioned by Dr. Jayashree also in her presentation, that in the later stages, vata also comes in. It may start with kapha and pitta actually. If you see the nidana of the causative factors of liver disease is kapha. Guru Abhishandi Ahar Vihar. If we do that, then kapha sets in. And if we eat a lot of Ushna and Tikshna Ahar, this thing, then again, Pitta is also coming in. So kapha and Pitta, they start with that. And then ultimately, Vata comes in. There is deposition of Medu Dhatu as well. And Yakrit is not able to basically do his Kriya properly. And that's where, the problems come in. Then there is Khabagyumne, there is obstruction of the shakhas, all these things happening, mix of everything. But very important to use Putki in that regard, because it can do Vedana of the malas which are deposited in the shakhas and help cleanse the pitta of excessive pitta, or actually ama pitta, if I can use that word here, which is very important and useful to do in this kind of regime. So inviting more questions. Okay, so thank you very much for all the participation from your side. And please keep posting if you have any questions on our YouTube link. We would be very happy to listen to that and help solve this problem of fourth number of disease, which is causing years lost due to the disease burden. So here it goes to the liver, the Yakrit Khanda, the unit Pinda, as we call it in Vedic or Ayurvedic language. Thank you very much, everyone. Appreciate your participation. Please join in us
join with us next time for more information, more informative sessions. Thank you. Jai Gurudev.